Hi, so in the last video we discussed about this question, which was counting bits. I told you about uh, the optimized approach of this problem that we will be solving using DP, and its time complexity can be optimized to order of n. Okay, we previously solved with order of n log m time complexity, but in this video we will be solving it using order of n time complexity, and it can be achieved by using dynamic programming. Okay, so first let me show you the question again. So the question states that given an integer n, you have to return an array answer of length n plus 1 such that for each answer I is the number of ones in the binary representation of I. Okay, so what does it mean? That the input is n, okay, which is any decimal number, let's say 5. Okay, and it is also one of the sample test cases. So for n equals to 5, you have to return an answer array. So this is your answer array which you will be returning to the function, and its size is n plus 1. So what does it mean? Its size is n plus 1, so its indexes will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Why? Because the size is 6. What was our n? It was 5. Okay, so n plus 1 is 6, and this is your array you will be returning. So what you have to return in the array is answer I. Okay, so this is your answer I. Okay, this is also your answer of I. Now what does this answer of I holds? This holds uh, let me show you. This holds number of ones in binary representation of I. So this answer of I holds number of ones in the binary representation of I. तो इसका मतलब क्या हुआ? Let's say you have 3, ठीक है? तो 3 का जो बाइनरी फॉर्म होता है, तो 3 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा? 1 1 होगा. तो इसमें कितने 1 आ रहे हैं? तो मैं एक्चुअली ये रिटर्न करना है. तो इसमें कितने 1 आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं. So on the index 3 you will write 2. Let's say you have 4. So what is the binary form of 4? The binary form of 4 is this 1 0 0. And how many ones are there? Only 1. So you will write 1 at index 4. Now let's say on index 5, what you will write? So the binary form of 5 is 1 0 1. Okay. So the binary form of 5 is 1 0 1. And now how many ones are there? 2. So you will write 2 here. Similarly, in this 2, at this index 2, so the binary form of 2 is 1 0. How many ones are there? Only 1. So you write 1. In 1 also, in the binary form of 1, there is only one occurrence of 1. In 0, there is no occurrence of 1. Okay. So this is what you have to return. Okay. So as I told you, this was the sample test case also, and let's see that our answer is matching with the sample test case or not. Okay. So, okay, let me minimize it. And okay. So their first uh, index 0 is 0. Okay. Then 1. Yeah, we have 1. Then also 1. Yeah, 1. Then 2. Then 2. Then also 1. Then 2. Okay. So our answer was correct. Yeah. So in the previous video, I have told you that we will first convert in the binary form, and then we will basically count the number of ones,
and store it in a vector. Okay, but this approach was taking order of n log n, oh, n log n, n log n time complexity. Okay, where m was the index I and n was the number of uh, decimals you have been given. Okay, but we will optimize it to order of n using dp. Okay, now how we will do that, let's see. Okay. तो मोस्ट ऑफ द डीपी के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, जो डीपी होती है वो उन चीज़ों पे लगती है कि जब कोई चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, मान लो कि कोई तुम प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर चुके हो, तो तुम्हें उस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम जहाँ पे कर चुके हो ना उसी को उठा के यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो बेसिकली ये डीपी का कंसेप्ट होता है कि अगर तुम कोई प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर चुके हो तो उसी को यूज़ कर लो फिर से ना, उसमें जो आंसर है ना उसको यूज़ कर लो, ठीक है। तो समझते हैं कैसे यूज़ करेंगे। नया पेज दे देता। सो लेट्स से कि 7 है, ठीक है, लेट्स से कि 7 है। सो व्हाट विल बी द बाइनरी फॉर्म ऑफ 7? इट विल बी 4 2 6 0 1 2, yeah. So this will be the binary form of 7, I think. Yeah, this will be the binary form of 7. So how many ones are there? 3. Okay, these are the occurrences of 1. Now you have 3. So how many ones will be in the binary form of 3? First, let's see what is the binary form of 3, which is 1 1. Okay, so this is the binary form of 3. And how many ones are there? Only 2. Okay, now are you seeing a pattern? What? Let me show you the pattern. So how we can use 3, जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि हम डीपी में क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ सॉल्व हो चुकी है ना उसका यूज़ कर लेते हैं अप, अपनी जो करंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये देखो 3 है, तो 3 का तो तुम पहले निकाल चुके होगे ना कि 3 में कितने अकरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, ओके, सो फर्स्ट लेट मी शो यू द पैटर्न कि 7 और 3 में पैटर्न क्या है। तो देखो 3 के अकरेंस 3 में कितने वंस आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें 7 के बाइनरी फॉर्म में कितने बनाएंगे तुम्हें वो निकालना है, तो उसके लिए तुम एक पैटर्न देखो कि जब तुमने 7 है इसको डिवाइड किया 2 से तो क्या मिलेगा तुम्हें, 3 मिलेगा, ठीक है। तो अगर 7 ऑड है ना, तो 3 में जितने भी नंबर ऑफ वंस आ रहे होंगे उसका बस एक इंक्रीमेंट करना है तुम्हें। देखो 3 में कितने वन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर दोगे तो तुम्हारे 7 के मिल जाएंगे। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आया तो। सो लेट्स से कि तुमने 5 ले लिया, ठीक है। तो 5 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 5 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, ये होता है। अब इसका तुम्हें निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हें 5 का डिवाइड बाई 2 किया तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। 2 में कित 2 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 1 0। इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 1, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो 2 का जो आंसर है वो तुम्हारा 1 है, ये तुम्हें पता है। और तुम्हें 5 का निकालना था, तो मैंने क्या बोला कि अगर 5 ऑड है तो जो भी इसका आंसर आया होगा ना 5/2 का उसमें 1 कर दो ऐड, और वो तुम्हारा 5 का आंसर बन जाएगा। तो 2 का आंसर 1 आया था, और 1 में देखो तुमने +1 किया तो इसका आंसर क्या हो गया,
2 हो गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 का आंसर तुम्हें निकालना है, तुम्हें नहीं पता, तो तुमने सबसे पहले क्या किया, 9/2 किया। 9/2 क्या होता है, 4 होता है। अगर तुम्हें 4 का पता हो तो उसमें तुम +1 करोगे तो 9 का आ जाएगा, ठीक है। तो 4 का बाइनरी फॉर्म लिख लेते हैं, 4 का बाइनरी फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो इसमें कितने 1 है, 1 है। तो 4 के बाइनरी फॉर्म में कितने 1 आते हैं, ठीक आता है ना, ओके। सो कहाँ थे, हाँ 1 आता है। तो अब तुमको अगर 9 का निकालना है तो मैंने क्या बताया था कि 9/2 में जो आंसर होगा उसमें तुम प्लस कर दो 1 का। तो 9/2 क्या है, 4 है। तो 4 में कितने अकरेंसेस ऑफ 1 है, 1। तो इसमें तुम +1 कर दोगे, कितने आ जाएगा आंसर, 2। और अगर तुम इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो। 9 का जो वो होता है बाइनरी फॉर्म, वो क्या होता है, खुद देख लो, ठीक है। ये होता है ना, यहाँ पे ये 8 हो जाता है, यहाँ पे अब ये 1 हो जाता है, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, हाँ एक चीज़ और, ठीक है। ये सब तुम्हें जब करना है जब ऑड हो, जब जब भी तुम जो तुम्हारा करंट इंडेक्स हो वो ऑड हो, इवन में नहीं करना। इवन में तुम्हें क्या करना है वो देखो। तो लेट्स से कि इवन तुम्हारा 8 है, ठीक है। अभी तक हम क्या ले रहे थे, हमने 9 लिया था, तो 9 ऑड था, 5 ऑड था। तो ये वाली चीज़ सिर्फ ऑड में करनी है। इवन में क्या करना है, इवन में देखो क्या करना है। तो इवन का हाफ किया, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 8/2, 4 आया। तो 4 में कितने वंस हैं वो काउंट करेंगे। तो 4 में तो सिर्फ एक ही 1 है, तो 4 का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर ये 8 ऑड रहता तो इसमें क्या करते, +1 कर देते, जो 4 का आंसर है उसमें +1 कर देते, तो ये 2 हो जाता, तो इसका आंसर 2 हो जाता। बट नहीं, अभी देखो ये इवन है, तो इवन में तुम्हें कुछ नहीं करना, जो इसका आंसर है ना वही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, करंट इंडेक्स का आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हारा करंट इंडेक्स इवन है ना, तो उसको जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो जो तुमने डिवाइड बाई 2 किया है उसका जो आंसर है सेम वही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। और तुम देखोगे भी, अगर तुम्हें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो 8 का जो वो है, क्या कहते हैं, बाइनरी फॉर्म, वो क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें कितने बना रहे हैं, 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम इसको शॉर्ट में समझना चाहो तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर तुम्हारा करंट इंडेक्स, ठीक है, उसमें दो केसेस आएंगे, इवन है तो क्या करना है, और ऑड है तो क्या करना है। देखो अगर इवन है तो तुम्हें जो इंडेक्स/2 का जो आंसर आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स/2 का जो आंसर आ रहा है उसमें +1 कर दोगे तो तुम्हारा करंट इंडेक्स का आंसर आ जाएगा ना, करंट इंडेक्स का आंसर आ जाएगा। बट अगर वो, सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया, हाँ, अगर ये इवन है तो इंडेक्स/2 का जो आंसर है वही इंडेक्स का आंसर होगा, ठीक है। बट जो, अगर तुम्हारा इंडेक्स अगर ऑड है, करंट इंडेक्स ऑड है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंडेक्स/2 +1, जो भी तुम्हारा इंडेक्स/2 का आंसर था, ठीक है, उसमें +1 कर दोगे तो तुम्हारा करंट इंडेक्स का आंसर आ जाएगा। इसको जब हम कोड करेंगे तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले कोड कर लेते हैं, ओके। इसको रिफ्रेश कर दे रहा, ठीक है। So you will take a vector into vector dp and its size will be n+1 because you will be iterating through to n, so you will be including n, so you have to take the vector size to n+1 to for not throwing a segmentation error in the compiler, okay. But if you want a segmentation error you can do this n+1 to n, you will be more than happy.
but yeah, I don't want any segmentation error, so I will take it as n plus 1. Okay, and what we know is that dp of 0 will always be 0. I mean, you can make it as answer of 0 will always be 0, because in 0 there is no occurrence of 1. Okay, so this, so we will solve for int I is equals to 1 to as to n I plus plus. Okay, so let me show you side by side what I am doing. I am just doing the same thing what I have told you. I am doing nothing extra. Okay, so if our index is even, okay, so if our index, let me take a better variable name, index, okay, so if our index is even, so our answer of the current index will be same as the answer of index by 2. This is what I have told to you. But if this is odd, okay, so this was a condition for even, and this is the condition for odd. But if it is odd, so our current index will store the answer. Okay, so this is what I have told you. Answer index by 2 plus 1. Okay, and in last you will return your answer, and this is also answer. Okay, so let me just show you the error. So when you will try to run the sample test cases, you will get the segmentation fault, and this is known as the segmentation error. When your yeah, so this is a segmentation fault that you will get if your index uh, tries to search for some garbage values. Okay, so it will be n plus 1, and now you can see that all its sample test cases will be passed. Okay, now let's try to submit it. Okay, so we successfully submitted the DP approach, and it was, yeah, it can be considered as one of the easiest DP solution, but uh, it is good to start with this type of questions. So I hope you like the solution. If you do, please uh, like the video. Thanks.